Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to English for Grade 6. We are learning Unit 2 Eid al-Fitr और हमारा आज का SLO है Sort the nouns by gender, that is masculine, feminine and common. For example, baby. Neuter, for example, property. So we are going to learn about gender of nouns, and that is masculine, feminine, common and neuter. So before this in English for grade 5, बेटा आप लोगों ने already पढ़ा है recognize the use of common grammatical gender used for both males and females. So we are going to learn further. Let's start with the name of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mentions in Quran Surah Al-Nahl verse 97, whoever does good, whether male or female, and is a believer, we will surely bless them with a good life, and we will certainly reward them according to the best of their deeds. जी मेरे प्यारे बच्चों, बेटा अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस आयत में हमें बहुत बड़ी एक एनकरेजिंग बात बताई है, और वो क्या है कि जो भी अच्छे काम करता है, इट डजंट मैटर वो मेल है या फीमेल है, एक आदमी है या औरत है, एक लड़का है या लड़की है, अच्छे काम करने वाले को ज़रूर अल्लाह ताला उसका अजर देंगे, उसका रिवॉर्ड देंगे, उसका इनाम देंगे. और इसमें हमें ये भी पता चलता है कि नेकी करने के लिए, अच्छा काम करने के लिए लड़का और लड़की दोनों की जिम्मेदारी बराबर है. यानी नमाज पढ़नी है तो लड़के ने भी पढ़नी है, लड़की ने भी पढ़नी है, तो एक फ़र्ज है. इसके अलावा अगर किसी की हेल्प करनी है, कोई आपने चैरिटी करनी है, तो लड़का अगर करेगा उसको भी अल्लाह ताला अजर देंगे, इनाम देंगे, और लड़की को भी. इसलिए बेटा नेकी करने में हमें पहल करनी चाहिए. ये नहीं सोचना, ना हेजिटेट करना, और ना ही कि मैं ये कर सकता हूँ क्योंकि मैं लड़का हूँ, या मुझे ये नहीं करनी चाहिए क्योंकि मैं लड़की. नो, हम सब अल्लाह ताला की मखलूक हैं, और अल्लाह ताला ने हमें इसीलिए दुनिया में भेजा है कि हम अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर पर अमल करें. राइट. सो बेटा हमें हर लम्हे नेकियां समेटनी है, यही हमारी ज़िंदगी का मकसद है, और यही अमाल इंशाल्लाह हमें जन्नत में लेके जाएंगे. राइट. नाउ माय डियर चिल्ड्रन, बेटा ये देखें मेल और फीमेल, वी नो दिस इज जेंडर ऑफ नाउन. लेट्स लर्न फर्दर. और हमें ये क्यों सीखने की जरूरत है? बिकॉज इट हेल्प्स अस स्पीक एंड राइट एक्यूरेटली, अवॉइडिंग मिस्टेक्स इन आवर सेंटेंसेस. राइट. हमें पता हो कि वी आर टॉकिंग अबाउट अ फीमेल, सो वी हैव टू यूज शी, और कौन कौन से नाउन उसके लिए यूज करने हैं, कौन कौन से प्रोनाउंस यूज करने हैं. इसी तरह मेल्स के लिए. सो हमें ये जब हमें कैटेगराइज करना आएगा, जब भी हम प्रॉपर यूज कर सकेंगे. राइट. और नोइंग नाउन जेंडर्स इंप्रूव्स आवर राइटिंग स्किल्स बाय यूजिंग द राइट वर्ड एंड फॉर्म्स. राइट. So, do you remember masculine noun and feminine noun? So, whatever you remember about it, pause the video, tell to your teacher about masculine and feminine nouns, and then come back. Yes, my dear students. So, masculine nouns are words used for men, boys, and male animals. And its examples are rooster, landlord, man, boy, many. Feminine nouns are words used for women, girls, and female animals. For example, hen, landlady, girl, etc., etc. Right. What is common gender? Words used for both males and females. For example, doctor, dancer, parents, etc. So beta, what does it mean? Common gender means a noun जो हम both gender के लिए use करते, that is common for males and females. For example, if we say doctor, it can be a lady doctor or a male doctor. So doctor means a doctor, a teacher, dancer, singer, parent, artist, writer. So these are all the words we can use for both genders. All right. Neuter nouns. Neuter nouns are the words for things that are neither males or females, are called neuter nouns. It means the nouns we use for non-living things, because non-living things does not have any gender. They are not males, they are not females. For example, ball, building, forest, chair, table, wall, board, etc., etc. So how we differentiate? This is important, we should know. Common noun is a noun which we can use for both
males and females. And neuter noun is a noun which does not have any gender. वो ना लड़का होता है ना लड़की होता है, right? वो तो neuter होता है, जिसकी example all the non-living things. Understand? Okay. So let's practice it. Learn further through an activity. ये activity आपकी book में दी हुई है. Work in pairs. One pair will compete with the other. A pair will say sentence using masculine or feminine. For example, these examples are given, beta. So follow these examples and all the pairs will carry out this activity. So pause the video, enjoy this activity and then come back. Yes, my dear students, I hope you mentioned a lot of examples. That's good. So it's time to practice from your book. All of you open your book on page number 15 and 16 and complete these activities given in your book. Pause the video, complete these questions in your book and then come back. Yes, my dear children, are you done with part A and part B? All right. So it's time for your homework. What you're going to do, go on a short walk or explore your home, observe things, peoples and animals. Either you can go outside or at your home, find out things, people and animal, categorize nouns as masculine, feminine, common and neuter, and write 5 simple sentences with these nouns. This is your homework, and here I'm giving you a worksheet. Dear fellow teachers, kindly print the worksheet, provide to the students for their practice. And in this way, we learned to sort the nouns by gender: masculine, feminine, common, and neuter. So that's it for today. Thank you and Allah Hafiz.